Hello viewers, how are you? In this video we'll discuss the change in demand and change in quantity demanded. ଆମେ এই ভিডিওରେ ଚାହିଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଚାହିଦାର ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା. So first we will discuss ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, change in demand and change in quantity demanded. So first we will discuss the change in demand. Change in demand. চাহিদারে পরিবর্তন. So it is a multi-value demand is a multi-value function we know. ଚାହିଦା ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ. So when what is change in demand or when the demand changes or when did the demand change, ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ହୁଏ ବା କେଉଁ ଉପାଦାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ. So keeping the price remaining constant when one or more of the other element changes, the demand changes. ଦରକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବା ତତୋଧିକ ଉପାଦାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ. ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଦରକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦରକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଉପାଦାନର ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଚାହିଦାରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହାକୁ ଆମେ ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା. So here we will keep the price as constant or remaining constant and change one or more of the other element. One or more of the other element means ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଜଳବାୟୁ, ସରକାରଙ୍କର ନୀତି, prices of related goods, ସମ୍ପର୍କିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର, then population. So ଜନସଂଖ୍ୟା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନର ଜନସଂଖ୍ୟା, ସରକାରଙ୍କର ନୀତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି, ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ପଲିସି ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ. ତ ଏଇ ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଉପାଦାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ. So here but the price remains the same, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ. ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ, the demand curve, when there is a change in demand, when there is a change in demand, the demand curve shift to left or to rightward. ଯେତେବେଳେ ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ଚାହିଦା ରେଖାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ. ଚାହିଦା ରେଖା ବାମ ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ. So I will make you more clear by drawing a diagram. ଆମେ ଏଟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା. ଆମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ନେବା, ଗୋଟେ ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଦେଖେଇବା. X axis, y axis. On the x axis we have taken demand, quantity demanded, or simply say it quantity परिमाण नीचे हमें, and on the y axis we have taken price. So this is we here we will take three demand curve. Three demand curve. This is the initial demand curve DD. So this is D1. This is D2. This is A, B and C. Price P. This is Q1 and Q2. This is called increase in demand. And this is called decrease in demand. Like ଚାହିଦାର ବୃଦ୍ଧି, ଏଇଟା ହେଲା ଚାହିଦାର ହ୍ରାସ. So here keeping the price remaining constant. ଦେଖ ପିଲେ ଦର ସ୍ଥିର ଅଛି, ଦର ସ୍ଥିର ଅଛି
कीपिंग द प्राइस रिमेनिंग कन्स्टांट द्रव्यर दर को स्थिर रखी अन्यान्य उपादान मान मध्य गोटे उपादान परिवर्तन फॉर एग्जांपल प्राइस रिमेन आम गोटे एग्जांपल लेकिन देखा सपोज द प्राइस रिमेन्स द सेम सपोज द प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर वर्ष तमाम ठंडा पानीय दर स्थिर रही है पेप्सी कि कोका कोला कि मिरिंडा यही सॉफ्ट ड्रिंक्स बा ठंडा पानीय दर वर्ष तमाम स्थिर रही है किंतु खरा दिने तार चाहिदा वृद्धि पाए शीत दिन में तार चाहिदा ह्रास पाए द प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर बट द डिमांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स increases rapidly during summer but the demand of cold drinks decreases sharply during winter कारण कौन जे जलवायु रे परिवर्तन है पाणीपाग रे परिवर्तन है जलवायु रे परिवर्तन हेले ठंडा पानी दर स्थिर अच्छी गोटे बोतल दाम धर नहीं जाओ से काच बोतल दाम धर 15 टंका शीत दिन भी थिला खरा दिन भी से 15 टंका थिला किंतु खरा दिने जलवायु परिवर्तन हेतु गरम अनुभूत हेतु तार चाहिदा वृद्धि पाइला किंतु शीत दिन तार चाहिदा ह्रास पाइला सो ड्यूरिंग समर द डिमांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स increases sharply but during winter the demand decreases so in this case the price remains the same and that is why this is called change in demand या कोन को माने change in demand चाहिदा रे परिवर्तन हला बोली कहबा कारण एटा दर स्थिर अछि and this can be shown with the help of आमे आउरी एग्जांपल नहीं परिबा फॉर एग्जांपल बाजार रे दर स्थिर अछि जो लोक माने अधिक परिमाण रे बाजार को गले चाहिदा वृद्धि पाए यदि बाजार को लोक माने कम गले चाहिदा ह्रास पाए तेणु जनसंख्या वृद्धि कि ह्रास हेले चाहिदा रे ह्रास वृद्धि होता है दर स्थिर थिले मध्य when the population in the market increases demand increases even if the price remains the same or the demand decreases sharply if the population decreases in the market so even if the price remains the same the demand increases or decreases due to the change in population so population जनसंख्या रे परिवर्तन हेले मध्य चाहिदा रे परिवर्तन होता है so this can be shown or we can show this in the diagram here we have taken price on the y axis and quantity on the x axis and initially the price is op दर केते अछि पिले प्राइस होछि op आमे एठारे दर बोली नेछु एठारे आमे परिमाण को नेछु हैला दर केते अछि op अछि एवं मूल चाहिदा रेखा the original demand is dd and here the consumer lies at point a on the demand curve उसे उपभोक्ता ए बिंदु रे अवस्थान करछंती दर होइतले ओपी अछि से चाहिदा रेखार ए बिंदु रे अवस्थान करछंती एवं से केते परिमाण द्रव्य क्रय करछंती ओ क्यू परिमाण द्रव्य क्रय करछंती नाउ सपोज द प्राइस सपोज आमे एटा आमे कोल्ड ड्रिंक्स रा एग्जांपल नै परिबा एठी आमे सपोज द विंटर कम्स ठंडा अनुभूत होला ठंडा दिन आसले कोन भापिले जे दर स्थिर अछि किंतु लोक मानकर चाहिदा ह्रास पाई थाए so when the winter comes even if the price remains the same people drink less and less amount of cold drinks that is why the demand decreases suppose आमे नै इमा for example आमे 1000 आमे बोतल आमे नेला आमे लोक माने 1000 बोतल माने पिउथिले कोल्ड ड्रिंक्स जेते बेला धरो 15 टंका थिला फॉर एग्जांपल 15 टंका थिला ले से 1000 बोतल कोल्ड ड्रिंक्स पिउथिले बट when the winter comes जेतेले शीत दिन आसला से माने केते बोतल पीबे वर्तमान फॉर एग्जांपल से माने 500 बोतल ताना पिउछन शीत दिन 500 बोतल कोल्ड ड्रिंक्स पिउछन तो आमे ई डायग्राम रे ई चित्र रे आउ देखै ना पारु आमे बुझी पारल पिल देखो 500 के आमे ई रेखा रे चाहिदा रेखा रे आउ देखै ना पारु वी कैन नॉट शो द 500 अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स 500 बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ऑन दिस कर्व ऑन दिस डिमांड कर्व बिकॉज ऑन दिस डिमांड कर्व आमे यदि ए डिमांड कर्व रे आमे यदि 500 के देखामा पहले आमे केते बेले आमे कम पीमा when did the people demand less when the price increases केते बेले लोक माने कम तान चाहिदा कम चाहसन किनबार लागि दाम बढ़ल है when price increases people demand less and less amount of good तो दर के आमे यदि बढ़ामा दाम के बढ़ामा बेले आमे ई डायग्राम रे आमे देखै पारमा देखो पहिले आमे ई डायग्राम रे आमे यदि एंता देखामा पहले दर के यदि बढ़ामा दाम बढ़ामा बेले देखै पारमा but in this case we cannot change the price किंतु ए क्षेत्र रे हमें दर के हमें परिवर्तन करि ना पारबार we cannot change the price that is why the demand को shift left तेनु चाहिदा रेखा कियाण को स्थानांतरित होबो लेफ्ट आड़ के माने ई प्राइस देखो कांस्टेंट अछि still the price is 50 rupees still the price is op
and the quantity is 500. People demanding 500 quantity of bottle or OQ amount of cold drinks when the price is 15 and the winter comes due to the coming of the winters. Winter आसला बोलिक शीत दिन आसला बोली लोक मैंने 15 टंकार 500 बोतल पिउछन बट से ही 15 टंकार से माने आगु केते पिउथिले 1000 बोतल पिउथिले बट ड्यू टू द कमिंग ऑफ विंटर ड्यू टू द चेंज इन द वेदर कंडीशन द पीपुल शिफ्ट दियर कंजम्पशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जेंड से शीत दिन आसला से माने ए बिंदु बी बिंदु के स्थानांतरित हेले एवं चाहिदा रेखा मूल चाहिदा रेखा थिला डी द इनिशियल डिमांड कर्व इज डी बट द न्यू डिमांड कर्व शिफ्ट टू D1 नुआ डिमांड कर्व केना पले आसला D1 के आसला एंड दिस इज दैट मीन्स ड्यू टू द एंड दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड या को कोन कमा हमें चाहिदार ह्रास बोली कहा जाए एंड व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन डिमांड द डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट चाहिदा रेखा चाहिदार जेतले ह्रास होची चाहिदा रेखा केनाडा स्थानांतरित होची लेफ्ट दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट. So due to the decrease in demand, the demand curve shift left. Again, suppose आमे पुणी ए बिंदु रे आमे वर्तमान अछु. आरो एग्जाम आरो साइड के आमे नो. Suppose we are lying initially we are lying at point A. आमे वर्तमान केन बिंदु रे अछु मूल बिंदु आमे A रे अछु. Now suppose the summer comes. गरम दिन आसला ग्रीष्म ऋतु आसला कण हेबा पिले when the summer comes still then the price is 15. Now people demand more of cold drinks. बर्तमान लोक मैंने 2000 बोतल कोल्ड ड्रिंक्स पिउछन पीपुल आर डिमांडिंग नाउ 2000 बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड हाउ कैन वी शो दिस 2000 बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स बाय शिफ्टिंग द डिमांड कर्व टू D2 बर्तमान आमे डिमांड करके आमे D2 के आमे फरमा तो कहबो सर आमे ई बिंदु रे काके देखे ना पालना देखो पहिले आमे ई बिंदु रे देखैती ता 2000 बोतल के दाम के हमको कम करवाली पड़ी था देखो दाम के हमको कम करवाली पड़ी था इनो ई देखावाले आमे जन 500 के देखावाली चाहला आमे दाम के हमको बढ़ावाली पड़ुथिला कारण आम केते बेले बेसी डिमांड करसु व्हेन पीपल डिमांड मोर व्हेन प्राइस डिक्रीजेस बट इन दिस केस प्राइस रिमेन्स द सेम दर के हम स्थिर रखुछु दर के स्थिर रखले ताले काने हेबा आम इनो यदि एंता काटमा बेले ई बिंदु रे हम गोटे नुवा चाहिदा रेखा काटला सो नाउ पीपल डिमांड एट पॉइंट पीपल डिमांड 2000 बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ड्यूरिंग समर व्हेन द प्राइस इज 15 एंड दिस शिफ्ट द डिमांड कर्व फ्रॉम D टू D2 तेणु आमे जिते बेले आमे से 15 टंका रे आमे खरा दिन 2000 बोतल कोल्ड ड्रिंक्स पीमा सेही से डिमांड करमा सेही समय चाहिदा रेखा D रु D2 के शिफ्ट करवा केनाडा शिफ्ट कला एटा राइट डाहण आड़ को एटा शिफ्ट कला राइट द डिमांड कर शिफ्ट टुवर्ड्स राइट सो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड चाहिदा रे काना हला पहिले वृद्धि हला सो दैट मीन्स when there is a change in demand, the demand curve shift left or the demand curve shift towards right. जेतेले चाहिदारे परिवर्तन हुए सही समय चाहिदा रेखार परिवर्तन होता है एवं चाहिदारे ह्रास हेले चाहिदा रेखा बाम आड़ को स्थानांतरित होता है एवं चाहिदारे वृद्धि हेले चाहिदा रेखा डाहाण आड़ को स्थानांतरित होता है. So here this is because the price remains the same. Then the second one we will discuss is the change in quantity demanded. Change in quantity demanded. Change in quantity demanded. Quantity demanded. चाहिदार परिमाण रे परिवर्तन चाहिदार परिमाण रे परिवर्तन वी विल टेक द ऑपोजिट केस आमे पूर्वरु कोन करथला आमे दर के स्थिर रखी करी आमे अन्य उपादान के परिवर्तन करथला बट इन दिस केस वी विल टेक अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट एंड व्हेन द डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जे अन्य समस्त उपादान को स्थिर रखी द्रव्यर दर रे परिवर्तन हेले चाहिदारे परिवर्तन घटी थाए एवं यहाँ को चाहिदार परिमाण रे परिवर्तन बोली कहा जाए एंड दिस इज डिस्कस्ड इन द लॉ ऑफ डिमांड बुझिपाल यहाँ को आम चाहिदा नियम आगु आलोचना कर सारी जे अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन द डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अन्य उपादान को परिवर्तन रखी चाहिदा द्रव्यर दर रे परिवर्तन हेले चाहिदारे परिवर्तन घटी थाए एवं यहाँ को चाहिदार परिमाण रे परिवर्तन बोली कहा जाए एंड इट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन एवं यह
ଏକ ଏହା କେବଳ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ କାରଣ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ନିଆଯାଏ। So in this case, or in this case, the demand curve does not change, unlike the previous case. এই ক্ষেত্রে চাহিদা রেখারে কৌশি পরিবর্তন হয়ে নথায়, চাহিদা রেখারে পরিবর্তন হুয়ে না। and we can show this now more precisely in a diagram। আমি গোটে ডায়াগ্রাম রে দেখাই পারমা ভাল করি। আস দেখামা পিলে দেখো x axis y axis we have already discussed this in the law of demand। আমি law of demand রে আমি দেখি সাইছো। দেখো suppose the price initially the price is suppose price is OP। আমি নো price নেছু, I know আমি Q এনো quantity নেছু, x axis রে আমি quantity নেছু and this is the in demand curve DD। here the demand curve remains the same, এঠারে চাহিদা রেখা স্থির আছে and here we are lying at point A on the demand curve। আমি চাহিদা রেখার A বিন্দুরে বর্তমান অবস্থান করিছু আর দর কেতে আছে পিলে OP আছে আর পরিমাণ কেতে আছে OQ আছে। now suppose the price when there is an increase in price, দর পরিবর্তন অন্যান্য উপাদান স্থির আছে, there is a change in price keeping other things remaining constant। suppose the price increases from OP to OP1, OP1 के दर वृद्धि पाला, परिमाण काणे हेबा पहिले OQ1 के से ह्रास पाला। now suppose the price decreases to OP2, the quantity increases to OQ2, देखो पिले एरा हैला B आ एटा हैला C। देखो here this the movement from A to B, the movement from A to B is called decrease in demand। A to B, the movement from A to B or the movement from Q to Q1, A रू B बिंदु को बोले हमें कौन कमा एटा contraction in demand। this is called contraction in demand, CONTRACTION। देखो पिले बही रे देखो बुक रे तुम रेफर करि पारबो contraction in demand, चाहिदार संकोचन contraction in demand। and the movement from A to C is called expansion in demand, EXPANSION, expansion in demand, expansion in demand। देखो that means here the price changes, other things remaining constant and the demand varies accordingly। this is called change in quantity demand। एठारे दर परिवर्तन होई थाए, अन्यान्य उपादान को हम स्थिर बोली नै थाउ, तेणु चाहिदारे परिवर्तन हुए एवं एहाकु चाहिदार परिमाण रे परिवर्तन बोली कहा जाय। and in this case the demand curve remains the same। एठारे चाहिदा रेखा अपरिवर्तित रही थाए, चाहिदा रेखा रे कोनोसी परिवर्तन होई नै, किंतु पूर्वरु चाहिदा रेखा रे परिवर्तन होई उठला। but and here initially the price is OP। देखो चित्र के देखो पिले दर केते अछि OP अछि, परिमाण केते अछि OQ and we are lying at point A on the demand curve। पूर्वरु बा मूल दर अछि OP एवं A बिंदु रे आमे चाहिदा रेखार A बिंदु DD होछि चाहिदा रेखा, DD चाहिदा रेखार A बिंदु रे आमे अवस्थान करिछु आ परिमाण केते आमे केते क्रय करिछु OQ। now suppose the price increases from OP to OP1, दर जेतेले OP रु OP1 को वृद्धि होला, সেই সময় আমি চাহিদা রেখার কেন বিন্দুকে আমি বর্তমান স্থানান্তরিত হলাম A বিন্দু রু B বিন্দু কে স্থানান্তরিত হলাম। and in this case we are purchasing less because the price has increased, that is why we are purchasing less, we are demanding less and that is why we move from point A to point B on the demand curve। same demand curve ଆମେ ସେହି ଚାହିଦା ରେଖାର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାଉ, ଏଠାରେ ଚାହିଦା ରେଖାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ସେହିପରି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦରରେ ହ୍ରାସ ହେଲେ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦରରେ ହ୍ରାସ ହେଲେ चाहिदा आमर चाहिदा वृद्धि पाई थाए एंड आमे ए बिंदु आमे सी बिंदु को स्थानांतरित होई थाउ। एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस द डिमांड इंक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज एंड वी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी ऑन द सेम डिमांड कर्व एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन डिमांड। एटा याको आमे कंट्राक्शन बा संकोचन, कंट्राक्शन बा संकोचन एंड एक्सपेंशन मीन संप्रसारण, बिकॉज़ आमे एटा के इंक्रीज और डिक्रीज बोली ना कहवा। this cannot be called as increase in demand or decrease in demand like the previous case because एठारे दररे परिवर्तन हेउछि, तेणु याकु आमे संकोचन बा संप्रसारण बोली कहि थाउ। and this is the change in demand and change in quantity demand। and you can found the distinction between change in demand and change in quantity demand in the examination। तुमे परीक्षा रे एमानक मध्य पार्थक्य दर्शाओ मध्य
क्वेश्चन पाइपार सर्ट नोट भी आसीपे सर्ट क्वेश्चन भी बहुत ये भितर अच्छी